Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is going to be a very short but very important video related to NORCET exam, where we will be discussing about the donning and doffing sequence of the personal protective equipments. PPE stands for the personal protective equipments. कि जब भी हम किसी भी ICU में किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, when we have to don means when we have to wear the PPE kit, what is the sequence that we follow? First thing is always wash your hands. सबसे पहले हैंड वॉशिंग करके सबसे फर्स्ट the thing which is worn is gown. उसके बाद मास्क. मास्क में एक important thing है, when you are wearing the mask, wear the top strap first. ठीक है, जब आप मास्क डाल रहे हैं या रेस्पिरेटर डाल रहे हैं, wear the top strip first. ठीक है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, अपनी नोज को we create a barrier ताकि हम रिस्पायर ना करें जो भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शंस हमारे आसपास हैं. ठीक है, उसके बाद we wear the shield or the goggles. Fourth is the gloves. And gloves जब डालते हैं, when we are wearing the gloves, we wear it on the dominant hand first. But जब उतारते हैं तो नॉन डोमिनेंट को पहले उतारना होता है. ठीक है, ये चीज तो आपने बहुत बार फॉलो की होगी, right? So when you are wearing the PPE kit, always wash your hands, wear the gown, then wear the mask. मास्क में भी टॉप स्ट्रैप पहले यूज की जाती है. उसके बाद you have to wear the eye shield or the goggles, and fourth is the gloves. And when you're wearing the gloves, always use the dominant hand first. उसके बाद आता है doffing. Doffing का मतलब होता है removal of the PPE kit. अब removal का sequence इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है so that आप minimum infection के exposure में आए. सबसे पहले आप gloves उतारोगे क्योंकि gloves सबसे ज्यादा contact में आए. So gloves को उतारने के लिए you should know that you have to remove the non-dominant hand gloves first. सबसे पहले non-dominant hand के gloves को उतारना होता है. उसके बाद goggles और the face shield, then the gown, then the mask. Mask last में उतारा जाता है, and after the removal of the mask, what we have to do is we have to wash our hands. Right? I hope this video was informational for you. Do remember the key concepts. That's all. This is a very basic but yet a very common question which is asked in the NORCET exams. I hope this video was informational for you all. Thanks. Subscribe for more.